तो मैम स्टार्ट करने जा रही हैं, तो सभी लोग वीडियो ऑन कर देंगे, ठीक है? Is it visible now? Is it visible now? Yes, ma'am. So have you gone through the PDF that I sent here today? Yes, ma'am. आज मैंने PDF भेजा था. Have you gone through it? सभी लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग रिप्लाई करो. जब भी मैम कुछ क्वेश्चन या कुछ बोल रहे हैं ना, रिप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, और वीडियो ऑन कर लोगे तो और भी ज्यादा इंटरेक्ट में इजी होगा. ठीक है, वीडियो ऑन कर लोगे और रिप्लाई करना यस सर जरूरी है. लाइक मैम को समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो? ठीक है, Ma'am, you are not audible. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और आ भी नहीं रही है अभी, तो एक बार फिर से ट्राई करें तो मैम कहाँ चले गए? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही और मैम चली गई. तो सभी लोग मजा आया जितने भी फोटोज शेयर किया था मैंने? यस सर. एक्साइटमेंट था फोटोज में? यस सर. जल्दी प्लान करेंगे सभी लोगों के लिए, ठीक है? हम लोग सभी लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे सेशन को. और अभी आईआईटी की टीम गई है वहाँ पे, एंजॉय कर रही है. हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी एंजॉय करेंगे एक दो दिन. इसमें कभी देखो डेफिनेशन और मीनिंग का डिफरेंस भी अलग अलग होता है. So shall I start now? Okay. But today I want to take up on museum types. Can anyone tell me that what are the various types of museums? War museum, natural history museum. And okay, let me start with. As I told you earlier also, that International Council of Museums, they have defined museum in a way that all, whatever type or whatever category of museum you take up, this definition is fit for all kinds of museum. Have you all learned this definition of museum?
I asked you to learn the definition of this museum because this definition will help you throughout. As you are in this course, you have to learn this definition. Okay? So to start with, I want to tell you that this definition is one, but it applies for all kinds of museums. And museums are based or classified according to its collection. Be it museum of nature or natural museum or environment related, or a museum which houses antiquity or manuscripts or any other archaeological collection, or any kind of technological or science, equipment, this kind of museum, or any masterpieces of artists. So these different kinds of museums have their own ambience, have their own setup, have their own way of presentation, but all these museums actually have the same definition, this definition that you can see on the screen. So can anyone read this definition? A museum is a non-profit permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment. Thank you. Now the next is, I want to say that whatever you have studied, defined, the definition you have read, all these different kinds of museums, this typology of museum, whether it's a general museum or it's a science or natural history museum, or it's a technology museum or history, art, any museum, they actually have the same definition. Museum, not about the collection, but it's the museum definition is same for all these kinds of museums. Now, what are the different types of museum that I'm going to tell you a bit? That we have, what is the meaning of type? What is the difference between type and typology? Can anyone tell? ये टाइपोलॉजी और टाइप दोनों ही वर्ड यूज किया जा रहा है, पर ये टाइपोलॉजी क्या होती है और टाइप क्या होती है? These are the basic things that you need to understand. So हम लोग टाइपोलॉजी की बात करते हैं. टाइपोलॉजी इज द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ समथिंग. Whereas type is the grouping. Like archaeology museum. Archaeology is a type of museum. Where in any archaeology museum you will find the archaeological collection. Which has been unearthed through excavation or exploration. So archaeology is a term and the museum which houses this kind of archaeological objects, they are archaeology museum. Have you got my point? So these archaeology museum, archaeological site museum, anthropology museum, art, Air Force, crafts, these are the various types of museum. Here are the few examples I have written over here. Any other example you can remember or you know about it? Is there a National Museum in Kolkata as well, right? Yeah, in Indian Museum Kolkata. Yes. Yes, Indian Museum Kolkata, it houses all kinds of collection. And okay, now let me go through one by one. So, as I told you that archaeology museum is the museum where archaeological collections are displayed and housed. So, what is the archaeological site museum? Archaeological site museums are those museums where
museums are put up on the site itself where excavation has been done. Those objects are not moved anywhere else except except a few, like if anyone has asked for any donation, or if someone has purchased, if some museum has purchased, that is different thing. Otherwise, the main objects that has been unearthed or excavated from a particular site has been displayed on that site itself. So that at a glance, when you visit a site, if you visit a site as well as a museum, it becomes clear to you that what was the nature of the site. Like the Sarnath. In Sarnath, we have a museum, archaeological site museum, which has displayed the objects derived from that site itself. So this is the basic difference between archaeology museum and archaeological site museum. Archaeology museum, I mean in Indian museum, for example, you have many archaeological objects. In Allahabad museum, you have objects, but those are from other sites also, but not from the same site. But in site museum, you will find the same object that has been excavated from that site itself. Like in Sanchi also, Khajuraho, then in Kalibanga, there are many sites where objects has been displayed on the site itself, not in situ, but nearby around the site from where the excavation has been done. Now, this anthropology museum. Anthropological, just like in archaeological site museum, Archaeological Survey of India has actually mainly, I mean, they were the pioneer in this kind of local museums, as was said earlier. In the same way, Anthropological Survey of India, they also established Anthropology Museum, and they have categorized in 6 journals. There are 6 zonal anthropological museums, and the headquarters is in Kolkata, and there are museums in Nagpur, Kerala also. So, in the same way, just as ASI, Archaeological Survey of India, has put up museums in various sites that they have excavated, the same Anthropological Survey of India also put up museums known as Anthropology Museum. Then Art Museum. Art Museum like National Gallery of Modern Art. It's a very one of the very popular nowadays. But apart from it, like in Chandigarh also there is an art gallery and museum. In Kolkata also. So if there are various art museums doesn't mean only paintings, but also that various sculptures and these kind of various branches of art. So you can actually collectively find those art masterpieces under one shape. That's a art museum. Then Air Force Museum. Air Force Museum houses collection of the Air Force Authority. In New Delhi, there is one museum, Air Force Museum, which is under Air Force only. Craft Museum. Craft Museum means, have you heard the name Craft Museum? Am I audible? Yes, ma'am. Have you heard the name Craft Museum? कोई आइडिया होगा क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ है या क्राफ्ट म्यूजियम हम किसे कहते हैं? क्राफ्ट मतलब क्या होता है? हैंडीक्राफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, उसी को हम लोग क्राफ्ट म्यूजियम बोलते हैं. दिल्ली में भी है क्राफ्ट म्यूजियम. नाम तो इसमें कुछ हैंडलूम वगैरह ही रहता है. हाँ जी, नाम तो इसमें कुछ हैंडलूम वगैरह ही रहता है क्राफ्ट म्यूजियम. हाँ हाँ. There is another Dolls Museum. Dolls Museum का नाम किसने सुना है?
मैम जयपुर में शायद है जयपुर का तो मुझे दिल्ली में है, दिल्ली। वहाँ पर in that you will find different thousands types of dolls are presented in that museum. There is another toy museum. Toy museum भी nowadays I think in Ahmedabad some kind of planning is going on to put up a toy museum. Then national museums. National museum आपने अभी बताया किसी ने नेशनल म्यूजियम कोलकाता, but that is known as Indian Museum Kolkata and National Museum is in Delhi. But there are other national museums, so I will come to that point. But let me clear this first. Just there is another museum, Rail Museum. Have you heard this Rail Museum? No ma'am. There is one Rail Museum in Delhi. It is under Railway Ministry. There is another Kite Museum. Kite Museum is in Ahmedabad. They have displayed various kinds of kites many years, and that Kite Museum is really a very beautiful museum to look at. There is one Parliament Museum. Parliament Museum is in Delhi. You can obviously understand it is inside Parliament only, and it functions under Parliament. Then there is Rashtrapati Bhavan Museum. Supreme Court. मैम तो पार्लियामेंट म्यूजियम तो फिर आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम भी कहा जा सकता है। हाँ बोल सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल नहीं है वो फिर उसमें आर्कियोलॉजी नहीं वर्ड आ सकती है हमेशा। पार्लियामेंट म्यूजियम एक्चुअली पार्लियामेंट म्यूजियम इज एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, उसमें सामान कम है बट डायग्राम मॉडल्स में ही ज्यादा पूरा काम है, पूरा टेक्निक से भरा हुआ है। You can see the latest technique used in museums. If you go to Parliament Museum, you will find the latest museum techniques has been used all over in Parliament Museum. आपको दिखेगा कि हाँ वो माइक पकड़े हुए, वहाँ पर वर्ड्स के कोई ऑब्जेक्ट उस तरह से आपको नहीं दिखेगा, बट यू विल फाइंड स्पीच दे रहे हैं, सत्याग्रह और गांधी मार्च हो रहा है। तो दिस थिंग्स हैव बीन done in such a way कि आपको जो भी लेटेस्ट साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सारे पार्लियामेंट म्यूजियम में। You will find that Nehru is delivering a speech. आपको सुनकर लगेगा कि yes, you are actually listening to Nehru ji. तो राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, it is in Rashtrapati Bhavan itself. There is a museum section is there, and it's a good one. Then there is another Supreme Court Museum. Here you will find some old manuscripts and everything that are used in the court. वो आपको मिलेगा वहाँ पे देखने के लिए। Then Personalia Museum. What do you understand by Personalia Museum? Personalia Museum जैसे कि इंदिरा गांधी म्यूजियम, गांधी स्मृति म्यूजियम, जिस जो एक फेमस पर्सनालिटी का या किसी को डेडिकेट करके जहाँ पर म्यूजियम बनाया जाता है वो ये पर्सनलिया म्यूजियम। म्यूजियम ऑफ मैन, म्यूजियम ऑफ मैन इट इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इन भोपाल। इट इज अ ह्यूज ओपन एयर म्यूजियम। ये दैट म्यूजियम इज विदाउट वॉल्स, मतलब कि हमें म्यूजियम भी यूजुअली पुट अप विदिन 4 वॉल्स, एनक्लोज्ड एरिया रहता है, बिल्डिंग रहते हैं। पर ये जो म्यूजियम ऑफ मैन है वेरी इंटरेस्टिंग वे दे हैव एक्चुअली बिल्ड दैट म्यूजियम। आपको म्यूजियम मतलब बिल्डिंग नहीं मिलेगा, ओपन एयर म्यूजियम से कहते हैं हम लोग। और उस ओपन एयर म्यूजियम में क्या है, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स के
जो भी ट्राइबल या फिर जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उस तरह से उन्होंने वहाँ पर बताया है। आपको देख के लगेगा कि हाँ आप एक एक गांव में आए हैं या फिर एक एक आपका रीजन का जो भी एक एसेंस है वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया का वो एक जगह पे पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। पैलेस म्यूजियम, कोई भी पैलेस में जैसे होता है, जैसे कि राजस्थान में बहुत सारे हैं बिग पैलेस वगैरह ये सब है, वहाँ पर भी जो पुराने जो भी है मतलब जो पैलेस है, जो राजा जो आज के डेट में वो अपना इस तरह से आपको नहीं दिखेगा किंग एंड क्वींस का वो, पर इन्होंने क्या किया उसको पैलेस म्यूजियम का कन्वर्ट कर देते थे सो दैट पीपल कैन कम ओवर देयर और उनका क्या फायदा होता है, दे एक्चुअली अर्न फ्रॉम दैट टिकटिंग एंड लोग आते हैं उनके दिन का टिकट रखा गया है और whosoever visit that museum obviously when you will enter any museum you will buy a ticket, उसी जो टिकट का वो सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो इस तरह से आपको you will find there are many palaces in India we have and those palaces have been converted into museums like in Gwalior. If you go to Gwalior, तो ग्वालियर का जो महाराजा थे सिंधिया का उनका जो पैलेस है that has been converted into museum so that people can come over here, तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है and that's the to preserve the culture as well as the for earning. हाँ मैम जो यहाँ बनारस का रामनगर किला पैलेस म्यूजियम हाँ वो भी है वही है, वहाँ पर ये भी पैलेस का उसमें म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है एंड हैव यू सीन दिस म्यूजियम? देन ट्राइबल म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम मतलब वही है कि जो ट्राइबल्स का भी जो भी है उनका जो भी क्योंकि आज नाउअडेज दोज ऑब्जेक्ट्स आर नो मोर इन यूज, जो ट्राइबल कल्चर है जो भी ट्राइबल एरियाज है जहाँ पर wherever they are using these things, I mean in a museum you will find in this type in tribal museum, there is a museum in Delhi also, you will find various objects that the tribal people used, starting from their instrument, musical instrument, clothing, everything they display. Now, you can in universities, many universities, they have put up museums for the students mainly and obviously for the general public also. So these are known as university museums. Can anyone name any museum? मैम भारत का लगा मैम Ja. और आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में भी है। तो दिस काइंड ऑफ कैन एनीवन टेल अबाउट भारत कला भवन म्यूजियम? भारत कला भवन म्यूजियम इन B.H.U and it has several artifacts and relics and paintings. It also have personally a museum like Alice Gina Museum and it has parts of it. What about science museum? Has anyone heard about science museum? Excuse me, ma'am. What makes a museum or university museum? क्योंकि हर म्यूजियम में आर्ट होता है, आर्टिफैक्ट होता है, तो इसमें यूनिवर्सिटी कैसे? Can you repeat? मैम हर म्यूजियम में आर्ट आर्टिफैक्ट के कुछ रहते हैं, तो मैम ये पर्टिकुलर म्यूजियम को यूनिवर्सिटी क्यों कहा गया? पर्टिकुलर म्यूजियम नहीं होता, मतलब जैसे कि जो म्यूजियम के अंदर होगा या यूनिवर्सिटी के अंदर होगा म्यूजियम, तो कोई भी म्यूजियम का हम लोग यूनिवर्सिटी म्यूजियम में नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली फाइनेंसिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ दैट म्यूजियम,
है ना, अलग अलग. Just now I will come up with this in the concept of how who is the owner of that museum. University is the Bharat Kala Bhavan. B.H.U is the owner of this Bharat Kala Bhavan museum. Thank you, ma'am. So another category is science museum. There are many science museums in our country, and these museums are actually, it's not like that कि हम लोग उसमें से कुछ laboratory या इस तरह से है, but it's a very fun kind of a museum. The children will learn the basic of science from by experiencing. जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स, ये वो सब जो भी है, वो सब हम लोग को साइंस म्यूजियम में मिलता है देखने को. ठीक है. एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम. नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का नाम आप लोगों ने कहीं पे कभी भी सुना हुआ है? जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं. दिल्ली, भुवनेश्वर, कहीं पे भी जाइएगा तो यू विल फाइंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑल ओवर इंडिया, whose main task is to preserve the natural things. कि आप फ्लोरा सोना जो भी है उसको हम बचाए रखते हैं. जैसे फॉसिल्स जो भी है मिलते हैं पहले, तो वो सब भी प्रिजर्व करके रखा रहता है कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम. A few years back, Natural History Museum in Delhi, जिसमें पूरा आग लग गई थी. Have you heard that? Can you hear me? Yes, ma'am. Have you heard about Natural History Museum? No, ma'am. Mm-hmm. Okay. Natural History Museum का बारे में कुछ आइडिया होगा? Can you make out anything from this word Natural History Museum? मैम प्रोबेबली म्यूजियम जिसमें मैम नेचुरल जैसे फॉसिल्स हो गए या नेचुरल मिनरल्स हो गए ये सब प्रिजर्व करते हैं. हाँ. So it is not like that कि वो लोकल का ही होगा, but it can be found from anywhere else also, other places also. So there is one word. हाँ. मैम ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में हम लोग प्लांट की स्पेसिमेन प्लांट से अलग अलग इसको प्रिजर्व करते हैं या जो नेचुरल हैबिटेट हैबिटेट्स नहीं, मतलब यू कैन फाइंड, जैसे कि आपको कोई बटरफ्लाई का कैसे रहता है, किस तरह से होता है, वो कैसे मतलब इसका डेवलपमेंट होता है, वो सब चीज छोटे छोटे जो चीजें हैं वो वहां पर रखा जाता है. और दैट एक्चुअली वी आर एबल टू गेट द आइडिया. हम लोग देखते हैं तो इस तरह से जो पहले के भी बहुत सारे फॉसिल्स में रहते हैं, कलेक्शंस रहते हैं, उनका जो भी पुराने का भी मिला होगा, कहीं पे दबा हुआ होगा या कुछ भी इस तरह से, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. जब आप कोई आर्कियोलॉजिकल साइट में भी हम लोग जाते हैं तो अगर वहां से भी कुछ इस तरह से मिल जाता है कि जो भी क्या कहते हैं फ्लोरा या फौना कुछ भी, तो वो हम लोग भी वहां पर नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भी हम लोग दे देते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन. ठीक है. बहुत कई बार होता है कि कुछ फूल पत्ते कुछ होगा, या फिर जैसे कि ये डायनासोर का बहुत वो चला था, वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में दे एक्चुअली ट्राई टू प्रिजर्व द स्केलेटन और ये जो भी है, वो जो कलेक्शन है वो उनके पास रहता है. जो हैबिटेट्स आप बोल रहे हैं उसको एक दिखाने के लिए हम लोग बना लेते हैं कि हाँ इस तरह से रहता होगा, दैट इज एक्चुअली मैन मेड. पर जो आप हैबिटेट से बोल रहे हैं वो हमें म्यूजियम ऑफ मैन में हम लोग को ज्यादा दिखने को मिलता है. जो हम लोग भोपाल की बात अभी मैंने किया है, उसमें भी आप बहुत सारे देख सकते हैं. और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में हाउ दिस नेचुरल थिंग्स आर, हाउ it used to exist and how it is existing and what we can do to preserve it. ये सब चीज नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में बताया जाता है. मैम वन मोर क्वेश्चन. मैम जैसे फ्लावर्स वगैरह रखे जाते हैं तो मैम क्या वो फ्लावर्स जैसे इसके ड्राई फ्लावर्स रहते हैं प्रिजर्व किए जाते हैं जो एक्चुअली में उसमें ग्रो किया जाता है स्टेम प्लांट? जो जैसे फॉर्म में मिलेगा, इफ इट इज इन ड्राइड वे, इट इज kept there and those researchers they can do research from that.
If it is not in my subject, मैं फूल को देखूं या समझ नहीं आएगा मुझे, but I can at least get an idea कि हाँ ऐसे हुआ करता था या what was the shape. जैसे मिलता है उसी हिसाब से वो लोग रखते हैं. They try to वो use different formalins, क्या कहते हैं, formalins and all these जो chemical preservatives है, they use those things to preserve it. जैसे मिलता है वैसे ही रखा जाए. म्यूजियम्स का काम ही यही होता है कि हम लोग उसे डिटीरियोरेट ना करने दें. ठीक है, अगर कोई लीव्स मिला है या फिर कोई कैक्टस फॉर्म में मिला है विच मे नॉट बी अवेलेबल नाउअडेज, तो हो सकता है उस कैक्टस को उसी फॉर्म में उसी किसी केमिकल में या किसी चीज में रखा रहा होगा, सो दैट इट कैन बी प्रिजर्व फॉर, क्योंकि ये जो फ्लोरा होता है, क्या कहते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो जल्दी, मतलब क्या कहते हैं, वो पत्थर है नहीं कि नहीं सालों साल चलता रहेगा. तो टू एड to for their longevity, what they do, they use different chemical preservatives to make it preserve. Okay. So there is another category of museum called wax museum. Very interesting. I guess my wax museum is about Madam Tussauds Museum. It is very interesting that you can do the life-size figures of wax are made, and वो होता है just for fun. आप जाइएगा किसी wax museum में तो you will see कि हाँ आपको क्या कहते हैं, गांधी का दिखेगा या फिर टेगोर का, या इस तरह से जो भी स्कल्पचर ऐसे बना रहता है, and people, I mean children, people, they go there and they enjoy. हम लोग इसके साथ फोटोग्राफी सेशन होती है तो चलो इसके साथ हमें फोटो खिंचवा दिया, इस तरह से. वैक्स म्यूजियम का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना नहीं है, बट स्पेशली इन आवर कंट्री, बट नाउ इट इज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट वैक्स म्यूजियम, क्योंकि उसका अलग टेम्परेचर भी चाहिए होता है सो दैट वो पिघल ना जाए, मतलब ठीक से रहे, इट शुड बी इंटैक्ट. Okay. And all these kinds of museums, you will, if you go through Usha Agarwal's Directory of Museum, and there is one another book on Delhi, Museums in Delhi by Anil Goel. If you go through these kinds of books, you will be able to understand the the various types of museums that are available in our country. If you ever get through, then please go through this Usha Agarwal book, because वहाँ पे pictures नहीं दिखेंगे आपको, but you will get a compilation of all the museum. It's a directory of museum. So now we are talking about this museum of various types. Now we have what we know about the various types of museum. But the information of knowing about this name of this museum is not sufficient for specialists, museum specialists, or students like you people who are actually pursuing this kind of courses. So you need to understand what are the authorities, who are the authority of this museum, how these museums are run. So as we know that these museums are non-profit organizations, permanent organizations. So how these, under whom these museums are actually running. So I have chosen few museums just to make you understand that museum is not only, it is not a institution for a museologist only. It's not that I am a museologist and I can create a museum and this is my museum or this will run for the people. No, it's not like that. There are so many things, so many tasks and so many works are put on to come out with a particular museum. And that's why I always say that a museum is not a one-man show, it is a team work. Now I have gathered a few museums to make you understand how these museums work. Now, just now I spoke to you about craft museum. What is this craft museum? How this craft museum came into being? Who is the
who is the authority of this craft museum. So in this way, there is one museum, but you have to question who, why, when, how, and all this, ये जो क्या कहते हैं, this question, whenever this kind of questions come up into your mind, you will find the answer and you will understand the basics of this. Now, the first one is the craft museum, is run by the Ministry of Textiles and it is under the government of India. अब आप बोलेंगे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये क्राफ्ट म्यूजियम क्यों बनाना है? Obviously, can anyone tell me? Because all these things came under textile. Because handicraft, handloom, these kinds of things came under textiles. The textile ministry है, we have so many, they have many collections. पहले का भी collections है कि कैसे जो भी क्या कहते हैं, कैसे करके how the weaving pattern has changed from hand woven to machine woven. वो जो pattern change हुआ है, उसके जो quality changes हुई है, so these things actually a kind of a research program for anyone who is doing this research on textile. किसी कॉन्सेप्ट के साथ ही शायद उन्होंने देखा कि ठीक है, इसको हम लोग एक जगह एक में शुरुआत कर सकते हैं and they have put up some museum where it makes us understand कि कैसे कैसे छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट जो भी होते हैं उनसे भी कैसे बनता है, से लेके कपड़े तक they have displayed in their gallery. ठीक है, तो ये जो क्राफ्ट म्यूजियम है it is under the Ministry of Textile. मैं इसके बारे में और भी डिटेल सारे म्यूजियम के बारे में बताऊंगी बाद में, but today I have taken up कि आप लोगों को just to give a brief idea कि how different museums are running under different authorities. Next is the Air Force Museum, and this museum is in Delhi, और this was the first kind of a museum. उसके बाद में हैल और ये बैंगलोर में आया है, इस तरह से और भी म्यूजियम later on developed. But in India, this Indian Air Force Museum, which is in Delhi, in Palam, near airport, वहाँ पर Air Force Museum बनाया गया, and that Air Force Museum has actually housed all those war planes. जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है वो भी रखा हुआ है, जो भी उनका यूनिफॉर्म होते थे एयरफोर्स में वो सब भी डिस्प्ले है. So it's a very interesting and very beautiful museum. But the problem is that in Air Force or any defense museum, they cannot hire civil people. So जो अपने आप में वो they cannot, they are looking after the museum. थोड़ा सा they take help or guidance from the museum expert, but the head of that museum is from Indian Air Force. There is another museum called National Rail Museum in Delhi only. It is under Ministry of Railways. So the Railway Ministry में क्यों आ गए? क्योंकि there are many, old जो carriage जो भी था पहले वो सब पड़ा हुआ था, तो उसको एक जगह डंप किया हुआ है. And what they did later on, that they one among them they thought that why don't we put up in a way so that more and more people can know about our past. तो पहले स्टीम इंजन हुआ करता था एंड नाउ दिस. तो जो लोकोमोटिव में जो चेंजेस आए हैं दैट यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रेलवे म्यूजियम. As I told you, there is one Parliament Museum which is in the Parliament of India Library building in Delhi. Parliament Museum का खासियत यही है कि वहाँ पे जो लेटेस्ट जो भी आपको गैजेट्स है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी जितने हैं वो सब यूज किया गया है पार्लियामेंट म्यूजियम में. एंड दिस पार्लियामेंट म्यूजियम एज वेल राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, इनका जो भी कॉन्सेप्ट है दैट इज डॉक्टर सरोज घोष, ही इज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट. साइंस म्यूजियम
राष्ट्रपति भवन म्यूजियम, पार्लियामेंट म्यूजियम, इनके पीछे उनका हाथ. We have given a different shape to this museum, different shape to science museum, so that children or the youngsters can enjoy and understand the principles of science and technology. There is one Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya. Just now I told you it is under the Ministry of Culture, and it is an autonomous organization. The Supreme Court Museum is within the Supreme Court, and there is one wing, there is one gallery, not gallery, it's the one wing where this museum has been put up. और डिस्प्ले में आपको पुराने जो भी इनके क्या कहते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा. देयर आर सो मेनी पिक्चर्स ऑफ द जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे. और जो डिफरेंट क्या कहते हैं, जो बैजेस होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट जो भी है उनका, तो वो आपको बड़े अच्छे से देखने के लिए मिलेगा. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड द म्यूजियम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आपको लगेगा कि हाँ, हम कोर्ट में आ चुके हैं एंड इट्स प्राइड ऑफ आवर नेशन. देयर इज वन शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, which is a large collection of dolls in Delhi over there, and it was set up by political cartoonist K. Shankar Pillai. And this museum is housed in Children's Book Trust building. Actually, it is a trustee museum. जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ट्रस्ट, प्राइवेट, ये सब अलग अलग जो है अथॉरिटीज, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड how these different authorities are playing their role in building up this museum. इनका क्या रोल है और what is the role of the general public. वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचते, बट being a professional in this field of heritage, museology, you must know and you must understand the background, the basics of this music. And lastly, I told you about Bharatiya Bhavan. It is a university museum, and it is within the premises of this university, and it is actually the main, the expenses and the caretakers are all from this university. Now, as I told you about the one category of museum is national level museum. And why do they are known as national level museum? Can anyone tell? हम लोग उसको नेशनल म्यूजियम क्यों कहते हैं? Why not all the museums are national museums? Why only few are national level museums? And these national museums are under the Ministry of Culture. And what is the importance of these national museums? Can anyone tell me? Am I audible? Yes, ma'am. हाँ, बताइए. Ma'am, probably National Museum houses Ma'am, am I audible? हाँ, बताइए. Ma'am, I think National Museum houses like it's an amalgamation of different kinds of museums. And it has like objects of national importance. The national importance as well as international importance objects are also there. एक नेशनल म्यूजियम को हर कोई विजिट करता है ना? तो in any national museum we have the collection of
precious collections of not only our nation but of other countries also. Cross country का जो भी collections होते हैं वो सब भी रखा जाता है, ठीक है. And in our country there are not only National Museum is a national level museum, but apart from that you will find like Salajuddin Museum in Hyderabad, Allahabad Museum, Indian Museum Kolkata, and the National Gallery of Modern Arts, National Council of Science Museum, जितने सारे हैं science museum, these are the national level museums in our country. And that's why होता नहीं है कि that's why it has its own importance. आप इन म्यूजियम्स में not only you will find archaeological objects of national importance ऐसा नहीं है, but apart from that इसके अलावा हम उसमें multipurpose museums ही होते हैं यहाँ पे. You will find sculptures, you will find textile gallery, you will find coins gallery, जो भी है डिफरेंट काइंड से है यहाँ पे. जैसे नेशनल म्यूजियम में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में भी यही है, इलाहाबाद म्यूजियम में भी. देयर आर मेनी मल्टीपर्पज म्यूजियम, ठीक है ना. एंड दिस म्यूजियम्स हैव इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में ही करता है ये. तो ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा कि नेशनल म्यूजियम्स क्या होते हैं और स्टेट म्यूजियम क्या होते हैं. State museums they have their own importance at the state level, पर national museums के जो है वो international connection भी रखते हैं. जो भी हम लोगों का like exhibition display होता है, international exhibition भी लगाए जाते हैं इसमें, और so that people from other parts of the country, the world, they also come and visit those museums. Any query? सलाजुद्दीन म्यूजियम का नाम सुना आप लोगों ने? म्यूजियम इन इलाहाबाद. Have you heard the name of these museums? Anyone? Ma'am, National Museum New Delhi and Indian Museum Kolkata. You have been to Indian Museum Kolkata? Yes, sir. Oh. So what is the most interesting thing you find there? Any particular Ma'am, I think they also have a natural history museum in that. There's a multipurpose museum. That's what I say. Multipurpose means you will find all kinds of display over there. वहाँ पर आपको Indian Museum Kolkata is the largest museum in our country, and it houses maximum display, maximum number of objects, where various kinds of, it has no parallel now. I think, ma'am, you will find Indian Museum Kolkata is much more bigger and much more, interesting. It is interesting because a student of school level, they also enjoy that museum. Ma'am, I think they also houses relics from Egypt as well. Yes. That's why I say Indian Museum Kolkata is a large, and they have the various different parameters of display. Yes. As I told you that there are various kinds of museums, various types of museums, and these different types of museums are under the state government, central government, district level, as well as university level. And there are museums which are under private. These four things, central, state, district, and museums and universities, are the public museums.
Why it is called public museums? Museums are for the public. Why it is called public museum? The public museums are created and managed by central, state and local government, and the government can charter a museum through legislative action. What is the meaning of this? A government can charter a museum through legislative action. A government can formulate a museum through the rules and laws of the government. And there is another category of private museums. Private museums are organized by individuals and managed by a board and museum officers. So private museums होते हैं, like as I told you about that Gwalior Museum, Palace Museum. It is a private museum. It is, it is under a private body. It is not under government museum. It is not under central government or state government. Public museum must follow legal and ethical standards, and it must adhere to its mission statement. This I will come to later on. Mission statement मतलब हर किसी का अपना एक statement होता है, एक mission होता है. They all are jotted in their legal profile. तो उसमें जो public museum होते हैं, they must adhere all this. And many public museums are members of professional museum organization and must follow the standard. And whereas a private museum is often a personal collector who is actually displaying his or her own collection and working in both ways, as both as a museum as well as a kind of a source of income, source of earning. So this is what I wanted to teach you today, and these are the various few museum clippings I have given over here. So this is the outside of a Bihar Museum in Patna. This is Sarnath Museum. This is the Wax Museum. This is the under construction of site museum in Chanderi. This is, can anyone guess? Can anyone guess? बता सकते हैं? हाँ? And is that Rashtrapati? No. This is Taj Museum. Taj Mahal. It's one monument inside this various collections of found in Agra Fort. They have been put up here. And this is museum, Geology Museum in B.H.U only. This is these are the people from that we went there in Geology department, and there is a museum over there. And the name of that museum is named under one professor, Professor Rajnath Memorial Museum. So they have a beautiful. Ma'am, I have visited Bihar Museum. Okay. How do you because like I am from Patna. Yes, ma'am, very like it. Very nice. And good collections. They have displayed in a way because it is the latest. It's not very old museum. It is a recent museum, so they have actually done very well. Inside Bihar Museum, there is a theatre hall also. In which they started a show which is about Girmitiya Mazdoor. But they have done very well. और बनारस के वाले किसी ने सारनाथ म्यूजियम देखा है? There are 1-2 students who. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों ने ये देखा है सारनाथ म्यूजियम? Yes, ma'am. Can you tell me anything about this Sarnath Museum? Ma'am, I recently went to Sarnath Museum and I just explored around and I saw the Ashok Chapel.
and other artifacts created from China. No, it is a very good museum. They have done, they have arranged beautifully, as well as it is under World Heritage Site, so obviously they are maintaining that status. So it is a good museum and people enjoy it because the site as well as the museum both are maintained. So Yes, sir. So that's all for today, and if you have any query, please do let me know. मैं धीरे धीरे आप लोगों को मतलब जो भी होगा PDF फॉर्म में मैं आपको भेजती रहूंगी बिकॉज इफ यू हैव यू सीन एनी बुक, हैव यू गॉट थ्रू एनी बुक, किसी को भी कोई किताब मिला? आप लोगों ने कोई सर्च किए हैं, कोई टॉपिक आप लोगों ने सर्च किया अभी तक जो कराया गया है? आप लोग बोलेंगे नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा. प्लीज आप लोग थोड़ा सा पिक अप समथिंग सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. आप लोगों ने कितना? मैम इंटरनेट पर सर्च किया है, कम से कम 100 से ज्यादा कलेक्शन है. हाँ, इंटरनेट से मैम बहुत सारे वेरियस जगह का मैंने कुछ कलेक्शन कलेक्ट किया है. आई थिंक कुछ एंशिएंट स्ट्रक्चर का, तो वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा. ठीक है, मैं अपने तरफ से भेजती रहूंगी. आज ही मैंने पहली बार भेजा था, तो इन दिस वे आई कैन सेंड यू सम नोट्स, नॉट नोट्स, मैं आप लोगों को भेजूंगी. यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑन योर ओन, क्योंकि अब वो आप स्कूल लेवल में है नहीं कि डिक्टेशन देके मैं नोट्स दूँ. दैट आई कैन डू, पर वो आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इसमें. ठीक है ना? आई कैन प्रोवाइड यू रीडिंग मटीरियल्स, यू गो थ्रू इट. लास्टली जब एग्जाम के पहले अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको नोट्स दूँ. मैं कह रही हूँ, नाउ कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी नाउ? Can you hear me now? अब आ रही आवाज? Yes, ma'am. What I was telling Yes, ma'am. that I will send you some reading material. You go through it, prepare your own notes, and then lastly I will send my notes. Otherwise, you will not study anything else except notes. I know. So I will provide you reading materials. Okay? But you have to go through it. आपको उन सबसे पढ़ के जाना है जो भी मैं आपको भेज सकूं. And apart from that, if you find anything else on your own, is good. ठीक है? Yes, ma'am. Anything, Sure. anything you want to say regarding my teaching, जो आपको पसंद है नापसंद है, प्लीज लेट मी नो. आई वोंट माइंड, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में है. फेस टू फेस होते हैं, इससे डिफरेंट इंटरेक्शन, और स्क्रीन में डिफरेंट इंटरेक्शन हो जाता है. प्लीज लेट मी नो what more you want from me apart from reading materials, and what kind of lecture you want from me for your class. इस तरह से ठीक है? और यू वांट समथिंग एल्स, मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? Okay. ओके देन, सी यू टुमारो. आज तक का जितना है आप प्लीज उसको थोड़ा सा पढ़ते रहिए. ओके? Thank you, ma'am. ओके.